Bismillahirrahmanirrahim. Students of second year, today we are going to discuss the remaining part of the pancreas. हमने अल्फा बीटा सेल्स को डिस्कस किया था, that secrete insulin hormone, and then we discussed the different disorders of the insulin hormone that lead into diabetes mellitus and mellitus type 1 and diabetes mellitus type 2. The next is glucagon hormone, which is secreted from the islets of the Langerhans. Glucagon, it is called as hyperglycemic hormone, increase the level of glucose in the blood. That's why it is called as hyperglycemic hormone. It is secreted from the alpha cells and consists of 29 amino acids. That is, it contains 28 peptide bonds. Increasing level. How the glucagon increase the level of glucose in our blood? It inhibit uptake of glucose by most of the cell, inhibit glucogenesis process, that is glycogenesis process, that is glycogen synthesis. Inhibit use of glucose, stimulate glycogenolysis, stimulate gluconeogenesis, and inhibit fat accumulation. For example, अब देखिए न्यू ग्लूकोजेनेसिस में फ्रॉम द ग्लिसरॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्लूकागॉन हार्मोन gluconeogenesis occurs, and in this the glycerol are converted to alpha glycerol, then into dihydroxyacetone phosphate, dihydroxyacetone phosphate and PGL combine to form one fructose 1,6 biphosphate. Then it is converted into fructose 6 phosphate by the reversal of the enzymatic processes. Ultimately it forms glucose 6 phosphate and glucose. Then secretion of the glucagon hormone. देखिए, if the glucose level becomes low, if there is no insulin, if in the presence of emergency condition अगर एपिनेफ्रिन हार्मोन ब्लड में मौजूद हो या ब्लड में अगर पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड आ जाए, तो इन 4 कंडीशंस में ग्लूकागॉन सीक्रेट होगा. इनहिबिट कब होगा? इफ़ ग्लूकोज लेवल इज़ हाई, नॉर्मल लेवल 90 mg पर 100 ml ब्लड है, तो अगर ग्लूकोज लेवल हाई है, मोर इंसुलिन अगर ब्लड में मौजूद है, नो एपिनेफ्रिन हार्मोन मौजूद है और नो पीपी मौजूद है. Similarly, if the blood contains somatostatin, एक और सब्सटेंस है जो अल्फा सेल्स को इनहिबिट करेगा नॉट टू सीक्रेट ग्लूकागॉन हार्मोन. देन 2 और सेल्स है, डेल्टा सेल्स और पीपी सेल्स. डी सेल्स इट इनहिबिट अल्फा सेल्स नॉट टू सीक्रेट ग्लूकागॉन हार्मोन, इट सीक्रेट सोमेटोस्टेटिन दैट इनहिबिट द अल्फा सेल्स. दूसरी चौथे किस्म के सेल्स दैट आर कॉल्ड एज पीपी सेल, यानी दे सीक्रेट पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज पीपी सेल्स. बोथ ऑफ दीज आर फ्रॉम द फॉर द स्टिमुलेशन टू अल्फा सेल टू सीक्रेट ग्लूकागॉन हार्मोन. That's about the pancreas. दूसरा ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहते हैं. सुप्रारेनल इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज ये देखिए इट इज़ प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द किडनी. फॉर एग्जांपल ये मैंने रेड लाइंस यहाँ पे मार्क किए किडनी के ऊपर, तो इट इज़ प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द किडनी, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज सुप्रारेनल ग्लैंड. देन अगर इस ग्लैंड को देखें तो लाइक द किडनी इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एड्रिनल कार्टेक्स और एड्रिनल मेडुला. Adrenal cortex 80% of the gland या 70 to 80% of the gland it consists of adrenal cortex, जबकि 20% पार्ट तकरीबन इसका एड्रिनल मेडुला पार्ट. एड्रिनल कार्टेक्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ACTH, एड्रिनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, जो इंटीरियर लोब से सीक्रेट होता है. It stimulates the adrenal gland, and then the adrenal gland it secretes its hormone that are called as cortisol hormone. तकरीबन 50 हार्मोन यहाँ कार्टिसोल ग्रुप में आते हैं that are secreted from the adrenal gland. Some important हार्मोन, इसमें से एक हार्मोन है मिनरलोकार्टिकॉइड या इसको अल्डोस्टेरोन भी कहते हैं. चैप्टर नंबर 2 में भी हमने इसका रोल पढ़ा था. that is involved in the absorption of sodium ion to increase BP. तब देखिए इट इज़ नॉर्मली कॉल्ड एज लाइफ सेविंग हार्मोन बिकॉज इफ द एड्रिनल कार्टेक्स इज कम्प्लीटली डैमेज एंड नो अल्डोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेटेड, डेथ अकर इन 3 to 15 days. देन इसके अलावा फ्रॉम द एड्रिनल कार्टेक्स बोथ इन मेल एंड फीमेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दे आर आल्सो सीक्रेटेड दैट आर इन माइनर अमाउंट द मेल एंड द फीमेल सेक्स हार्मोन. इसके अलावा ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन सीक्रेट होता है दैट प्लेज रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स. दूसरा पार्ट है एड्रिनल मेडुला. एड्रिनल मेडुला से 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेट होते हैं. इट इज़ एक्चुअली a ganglionetic chain that is stimulated only in emergency condition, and then it secrete 2 important hormone. These are actually called as life protective hormone because they prepare the body to overcome the stress and strain condition at the time of emergency. एक हार्मोन है एपिनेफ्रिन, दूसरा है नार एपिनेफ्रिन. या एपिनेफ्रिन को दूसरा नाम है एड्रिनलिन और दूसरे का है नार एड्रिनलिन. एपिनेफ्रिन के मेन फंक्शंस हार्ट, लीवर और लंग्स पे आते हैं, यानी इट स्टिमुलेट हार्ट बीट,
दैट सर्कुलेशन बिकम्स फास्टर, लीवर को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज मोर ग्लूकोज, और लंग्स को स्टिमुलेट करता है टू परफॉर्म एक्टिव ब्रीथिंग प्रोसेसेस। जबकि नॉर एड्रेनालिन इट नॉर्मली मेंटेन्स बीपी एज वेल एज वैसो कंस्ट्रिक्शन ये करता है। देन कभी कभार ये डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ द ग्लूकोकार्टिकाइड हार्मोन दैट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द एड्रिनल कार्टेक्स। तो अगर ग्लूकोकार्टिकाइड हार्मोन एक्सेस में सिक्रीट हो जाए या डिफिशिएंट अमाउंट में सिक्रीट हो जाए तो इनके दो डिसऑर्डर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ द ग्लूकोकार्टिकाइड इज सिक्रीटेड इन एक्सेस अमाउंट इट लीड इनटू अ डिजीज दैट इज कॉल्ड एज कोशिंग सिंड्रोम। यहाँ पे इट लेड इनटू मोर प्रोटीन ब्रेकडाउन एंड द मसल्स बिकम्स वीक एंड फ्रेजाइल। और अगर इसका डिफिशिएंट अमाउंट में सिक्रीशन होता है, द कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोसिक्रीशन, देन इट लेड इनटू अ डिजीज दैट इज कॉल्ड एज एडिशन डिजीज। इसमें से द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बिकम्स एबनॉर्मल, लो एनर्जी लेवल, फेटीग और ब्राउन जीटोन ऑफ द स्किन अपीयर्स इन, तो स्किन पे वाइट से डॉट्स बन जाते हैं। देन कम गोनेड्स। गोनेड्स दे आर आल्सो कॉल्ड एज द endocrine glands, and they are not only called as the endocrine glands but they are also involved in the production of male and female gametes. So they are the gamete producing organ as well as the hormone producing organs. For example, the gonads, they are called as ovaries in the female and testes in male. Ovaries कर देखें तो द ओवरीज दीज आर द स्ट्रक्चर दैट नॉट ओनली प्रोड्यूस ओवा बट इट आल्सो सीक्रेट द फीमेल सेक्स हार्मोन, द मेन या इंपॉर्टेंट फीमेल सेक्स हार्मोन दीज आर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन देखिए इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एज वेल एज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन द फीमेल बॉडी एट प्यूबर्टी। जबकि प्रोजेस्टेरॉन इसका मेन फंक्शन promote thickening and vascularization of the uterus for implantation of the zygote as well as maintain pregnancy and development of the breast during pregnancy. आई मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट कर देता है। मोर डक्ट्स आर फाउंड इन विच मोर मिल्क सिक्रीशन विल अकर आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को कंबाइन लेकर देखें तो दे आर एक्टिंग विद द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन टू प्रमोट ब्रेस्ट डेवलपमेंट एज वेल एज प्रमोट साइक्लिक चेंजेस इन द यूट्रस यूटेराइन म्यूकोसा इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। देन टेस्टिस, they are the male gonads, they are present in the extra abdominal skin pouch that is called as scrotum. Not only produce sperms, they are the male gametes, but they are also involved in the secretion of male sex hormone that is the testosterone hormone. अब टेस्टोस्टेरोन देखिए इनिशिएट मैच्योरेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके अलावा अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एज वेल एज द सेक्स ड्राइव, necessary for the normal sperm production, maintain reproductive organs in their mature and functional state in adult males. इसके बाद टॉपिक दिया है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म ऑलरेडी डिटेल में सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, तो वो इंशाल्लाह वहाँ से देख लें। नेक्स्ट इंशाल्लाह बिहेवियर शुरू करेंगे।